हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू निफ्टी 500 डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। सो लेट्स लुक एट द मार्केट एंड आई लुक एट द मार्केट। मैं देखूंगा वाया ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर टर्मिनल है। आई लव दिस टर्मिनल और इसके जरिए मैं एनालिसिस करता हूँ। एंड ये एनालिसिस के लिए मैं अपना क्रिएटेड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करूंगा। ये जो वीडियो है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी बिलीव नहीं करता किसी का सुन के यू शुड लिसन टू एनीवन एंड ट्रेड, दैट यू शुड नेवर डू। दैट इज हम लोग स्टार्ट किए हैं इस साल 2025 रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1, दैट वी डू नॉट लिसन टू अदर्स इन ट्रेडिंग। तो ये वीडियो बेसिकली मेरा वीडियो लॉग है, जो मैं पीछे जाके देख पाऊंगा क्या मैं सोच रहा था। और साथ में दिस वीडियो इज मेंट टू हेल्प जो लोग ये रेनबो सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। दोज हु यूज दिस सेटअप, दिस वीडियो इज मेंट फॉर देम एज वेल एज माय वीडियो लॉग, नॉट आर ट्रेड रिकमेंडेशन। नाउ इसके जरिए हम लोग निफ्टी को देखेंगे, बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स निफ्टी, लेट्स ब्रिंग द निफ्टी चार्ट। दिस इज द निफ्टी चार्ट, वीकली चार्ट। और पहले बिफोर आई अप्लाई माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, बिफोर दैट आई वांट टू लुक एट द रिस्क मास्टर। सो रिस्क मास्टर मिलने के लिए यू हैव टू गो टू इंडिकेटर्स, इनवाइट ओनली, एसडी रेनबो वे V2। V2 को क्लिक कीजिए एंड साथ में उसमें रिस्क मास्टर सिलेक्ट कीजिए, साइज बड़ा कीजिए एंड अप्लाई। Once applied, you can see the risk master here. Overall, in the weekly chart, we can see that risk master is showing relatively safe equity drawdown measures. However, recession risk is going up. Recession risk turnaround moment aa chuka almost as per this reading. We will remain careful with our investments. However, the short-term risk measurements, the first four, pehla char, 1, 2, 3, 4, drawdown measure 1, 2, forward risk measure and rising risk rate, सारे दिखा रहा है कि it's more on the falling side. But daily chart is the one which is we should give the highest weightage. एंड इसमें मुझे दिख रहा है कि रिलेटिवली सेफ, बट एक क्वाड्रेंट दिखा रहा है कि रिस्क जो है वो राइज हो रहा है रैपिडली, एंड शॉर्ट टर्म टर्मोइल रिस्क है थोड़ा एलिवेटेड। with this, now we'll go to the 125 minutes chart, जो which is short term swing time frame chart। और इसमें लास्ट में हम लोग देखे थे कि मार्केट इज कमिंग डाउन, तो हम लोग रिकवरी एक्सपेक्ट किए थे और रिकवरी निफ्टी में हो तो रहा है, बट ओवरऑल रिस्क मेजर थोड़ा हायर साइड में। दैट मींस वी कैन सी सम zigzag risk or zigzag volatility. Now, the overall risk master, we should be careful that the recession risk has going up significantly, and any kind of drawdown risk will have to be very, very careful of. Now let's remove the risk master and bring on the asset master. Asset master ke andar, first we are going to take a look at the weekly chart. And weekly chart, if I look at Nifty, the situation is not that bright. Background is red. That means short-term trend is bearish. ये fountain of gold is of 12 factors. ये 12 factor का fountain of gold है. Now मैं 12 factor में I can see 7 factors are bearish. 3 and plus 1, 4 factors are bullish and 1 is neutral. सेल ट्रेड का जीतने का प्रोबेबिलिटी, द टॉप मीटर दिखा रहा है 50% प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी, हाफ ए चांस की सेलर्स गोना विन, 36%, 1/3 चांस की कंसोलिडेट होगा, एंड 1/4 चांस की बाय ट्रेड विन रहेगा। तो बायर्स के लिए मार्केट इन द वीकली चार्ट रिमेन्स अ बिट रिस्की। नाउ preferred trades remains buy support and buy breakout. That means even if Nifty falls,
these levels are expected to provide support, which is already it is doing. एंड ये एम्प्टी लाइन भी सपोर्ट देने का एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, बिकॉज प्रेफर्ड ट्रेड्स रिमेन्स बाय सपोर्ट एंड बाय ब्रेकआउट. नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट. डेली चार्ट में वी कैन सी द कमबैक दिख रहा है. However, comeback is not yet, we can say it is bullish. different probability के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. Let me look at the probabilities again. It was expected that market will stop around this area. If we bring on the actual candlesticks, we'll be able to almost इस area के पास पहुंचा, and from there we could see some comeback. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद market made several bottoms, not a perfect double bottom. perfect होने से दोनों पॉइंट एक साथ टच होता. ये जो लोएस्ट पॉइंट, those 2 points टच होता हुआ नहीं. so it's a medium strong double bottom, और डबल बॉटम के पास से ही सपोर्ट लिया गया है. मार्केट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम दिस डबल बॉटम एरिया. नाउ वी विल डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज. मतलब जनरल एक प्रोबेबिलिटी का लुक देखेंगे क्या दिख रहा है एज पर. तो एक प्रोबेबिलिटी तो है ही कि मार्केट विल एस्केप फ्रॉम दिस, एंड दिस इज द बेस्ट प्रोबेबल आउटकम फॉर द बायर्स. पॉसिबल है. साथ में इस टाइम पे ट्रम्प का इनॉग्रेशन कोऑर्डिनेटेड है, सो मार्केट कैन गेट द सेकेंड राउंड ऑफ ट्रम्प बूस्ट. अगर यहां से ब्रेक नहीं हो पा रहा है स्लैंटिंग जोन से, अगर इफ इट्स ब्रेकिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्लैट जोन, इट इज लाइकली कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसमें इसको इट कुड नॉट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक, एंड दिस इज अनदर बुलिश प्रोबेबिलिटी फॉर द बायर्स. Now to determine the probability is better, we'll have to draw some future lines. Now ये जो flat line बन चुका है, this will act as some resistance. तो निफ्टी का एक probability ये भी है कि it goes up and down and then breaks higher from the slanting zone. और एक probability definitely है towards which is the bearish case, it goes up and comes back, breaks below this. इसके अलावा भी कई सारे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, विच विल माइन्यूट हम लोग प्रोबेबिलिटी ड्राइंग कर सकते हैं, बट एक ब्रॉड आइडिया लग सकता है. दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. अगर बायर्स के साइड से देखें, देन दिस कुड बी वन अप्रोच, इट इज स्टेडीली गोइंग अप. This could be another approach, gradually going up from this slanting zone. Another could be more consolidation, and future around February month, it breaks higher. Or it turns absolutely lower, which is very high probability है. But currently अगर projected probability देखे तो 71% चांस की कंसोलिडेशन होगा, मतलब एक रेंज बाउंड होगा. और प्रेफर्ड ट्रेड्स दिख रहा है सेल ब्रेकडाउन, सेल रेजिस्टेंस, मतलब सेल रेजिस्टेंस मिलने का चांस हाई प्रोबेबल है. टोटल फैक्टर में अगर देखा जाए 5 फैक्टर मुझे दिख रहा है बियरिश 12 में से, एंड 4 फैक्टर दिख रहा है बुलिश. अराउंड 3 फैक्टर्स आर न्यूट्रल. तो एक कंसोलिडेशन रेंज होने का चांस रिमेन्स क्वाइट हाई, अराउंड 71%. Now we will look at 125 मिनट चार्ट और 125 मिनट चार्ट को नजर करेंगे, एंड उसमें क्या दिख रहा है, इच इज मोर शॉर्ट टर्म स्विंग, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. तो मुझे दिख रहा है एक कमबैक बुलिश के लिए. देखिए मोमेंटम डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस देखने के लिए यू कैन सिलेक्ट द सेटअप टू डाइवर्जेंस, एंड क्लाउड दिखेगा सिर्फ. तो दिस क्लाउड के जरिए हम लोग डाइवर्जेंस देखते हैं. सो इट इज क्लियर कि मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस तो है. सो फर्दर निफ्टी का राइज कैन बी वेरी मच पॉसिबल 125 मिनट्स में. ऊपर में की तरफ कई सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, 20,000, 3,921. ये रहा एक रेजिस्टेंस फ्लैट लाइन का, जिसके साथ एम्प्टी लाइन यानी रेड लाइन भी पास आ रहा है.
सो कई सारे रेजिस्टेंस है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, and that means one resistance is around 23,900 to, of course, 24,000 is the psycho area, and 24,050 57. Then we have upside 24,200, and the mountain top, this is the mountain top resistance, the toughest of them all, 24,400 ke paas. So currently, even if Nifty does not turn bearish, which it can very well can ki रेजिस्टेंस देन इट टर्न्स बेयरिश, बट अगर ऐसा नहीं हुआ फिर भी अपसाइड कई सारे रेजिस्टेंस है विच इज नॉट लुकिंग बुलिश एंड हेल्दी. नाउ लुकिंग एट द वीकली चार्ट, हम लोग जो अपना डिटर्मिनेशन करेंगे वो करेंगे फ्रॉम द निफ्टी 500 चार्ट के जरिए कि स्टॉक्स में क्या करना चाहिए. वंस अगेन दिस इज, रिमेंबर रखिएगा, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन. सो निफ्टी 500 कैन टर्न बुलिश, क्योंकि देखिए कैंडल छोटा हो चुका है, मतलब जो बियरिश प्राइस एक्शन उसका स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है. दिस इज द कैंडल साइज इज नाउ स्लोअर लोअर. कंसोलिडेशन होने का चांस 43, सेल ट्रेड का 43 एंड बाई ट्रेड का प्रोजेक्टेड विन अराउंड 30%. तीनों का मिला के 100 होना जरूरी नहीं है बिकॉज दीज आर प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी. यहां पे भी थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस तो दिख रहा है, बट लुकिंग एट दिस चार्ट आई विल से स्टिल इट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया टू पार्टिसिपेट इन द फुल क्वांटिटी. आपका जो अलाउड क्वांटिटी है, जो लोग मेरे क्लास कर चुके हैं, यू नो अबाउट द क्वांटिटी, तो आपका इधर हाफ या तो 1/3 क्वांटिटी से पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द मार्केट. सो ओवरऑल इट्स नॉट लुकिंग दैट हेल्दी द इंडियन इक्विटी मार्केट. सो वीकली चार्ट प्रीटी बियरिश. इफ वी लुक एट द डेली चार्ट, यस कमबैक दिख रहा है, वी कैन ऑब्जर्व द कमबैक, ये रहा कमबैक दिख रहा है, बट कंसोलिडेशन होने का चांस कई ज्यादा है निफ्टी 500 का. सो बहुत सारे ब्रेकआउट्स जो हो रहे हैं, दे हैव अ हाई रिस्क चांस की फेल हो. 125 मिनट्स में अगर चार्ट देखा जाए, निफ्टी 500 चार्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, बट ये जो बाई सिग्नल आ रहा है, इसके साथ साथ ये व्हाइट क्रॉस outside the candle body होके बता रहा है something is wrong, which basically means this Nifty 500 can suffer resistance around जो ये जो एरिया है, इस एरिया के पास it is going to suffer the ये and this empty line around 22,600 के पास lies the major resistance for now. और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, देन वेरी लाइकली निफ्टी 500 विल बी बैक अगेन टेस्टिंग ये सारे लेवल. ये जो फ्लैट लाइंस लेवल है 22,791, ये सबके पास ये लेवल्स निफ्टी 500 टेस्ट करना चालू करेगा. एंड another worst case, obviously it remains, you have to remain aware of the probability that it goes up towards this empty line and then falters and come back. सो ये रिस्क को भी हम लोग को याद में रखना होगा कि दिस इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है, जैसे ऊपर के जाने का प्रोबेबिलिटी भी है. इट गोज अप, कम्स डाउन एंड देन ब्रेक्स वाया दिस स्लैंटिंग जोन टुवर्ड्स 20th January एंड देन वी कैन सी हाउ इट गोज. बट ओवरऑल इसका भी एक प्रोबेबिलिटी कि नीचे की तरफ निफ्टी कैन गो लोअर. और ये ट्रांजिशन समझने के लिए कि निफ्टी अगर टर्निंग बियरिश और नॉट, द मोमेंटम विल बी अ की. अगर मोमेंटम फेडिंग दिखा रहा है फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस जोन, दैट मीन यस निफ्टी कैन फर्दर falter and come down. So overall, I'll say some of the comeback is happening. We can see from the green, but is it safe? We can't say for now. It does not look that safe. Lot of resistance and white cross है candlestick के बाहर. So overall जो picture मुझे दिख रहा है, it is more of a cautious होने का, caution मनाने का picture है. And weekly chart के हिसाब से we should still keep it pretty small. थोड़ा small ही रखना चाहिए अपना position sizing, unless we start getting back the bull trend. जब तक bull trend वापस नहीं आता, it's better to have much lower quantity participation. So that's all friends. Thank you so much for watching this Nifty 500 video. अगर आपको पसंद आया, don't forget to give a thumbs up
All the best from my side, and as always, happy trading.